So here we are in problem number 3. Okay. So in problem number 3, just to give me 1 second. Worksheet 2. Problem number 6 onwards we'll try. So he given the problem, the center and radius of the circle with segment of the line x plus y plus is equals to 1, cut off the coordinate axis at a diameter. Okay, the center, and he is asking these two, and this is a circle, this is a circle, and the line segment cut off the coordinate axis. What is this meaning? Center and radius, so okay, of the circle with a segment of line cut off the coordinate axis as diameter. Let's see this sixth question. Sixth question. So you made it is problem number 2. CUQ is done. Now try to understand this. X plus y is equals to 1. Okay, this it's a line segment. It's a line segment intersects the coordinate axis as diameter. ये आपके diameter है. The understanding of మనం ఈ క్వశ్చన్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటూనే మిస్టేక్ అవుతుంది. I'll repeat the question. What is the question here? The center and radius of the circle with a line segment. The line segment cut off by coordinate axis. Okay, and what is this line segment? It is y is equals to minus x plus 1. Okay, minus x plus 1. It's a negative slope with a 0, 1. अगर यदि आप coordinate plane इट्ला తీసుకోవచ్చు, coordinate plane ఎట్లా తీసుకోవాలా, ఇట్లా వస్తుంది coordinate plane. ఓకే, ఇట్లా వచ్చిన లైన్ ఈక్వేషన్ లా ఇక్కడ 1 ఇక్కడ 1 ఉంటే ఈ y is equals to minus x plus 1 అనే లైన్ ఇది. Okay, this is minus 1 plus 1 minus x plus 1, and this is the diameter where it is cut off by the coordinate axis as the diameter. This is the piece of the diameter. E diameter piece aindante, so what is these are intersects when x is equal y is equals to 0, x is equals to 1 comma 0. Okay, and this is 0 comma 1. So this is your center, and now these are the intersecting points. अब center क्या होगा? Center will be 1 by 2 comma 1 by 2. अब distance क्या होगा? Distance is nothing but root 2 by 2 होती है, because what is the distance? Total distance by half. Okay, if you take this is A, this is B, what is the AB distance is equals to under root of 1 minus 0 whole square plus 1 minus 0 whole square. It is nothing but root 2, and half of this distance is radius.
implies r is equals to ab by 2, ab by 2, which is 2 by root 2, root 2 by 2, root 2 by 2, root 2 by 2, and this will intersect by 1 by root 2. It will form as 1 by root 2, 1 by root 2. So the option is 2. Option is 2. Okay, is it clear? समझ में आया? आप म्यूट हो, कुछ तो रेस्पॉन्स देना पड़ेगा. ठीक है, ध्यान रखना ये लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए. नेक्स्ट, सेवेंथ वन, कैन यू रीड अप द सेवेंथ वन? द लोकस ऑफ द अदर एंड ऑफ द, एक क्वेश्चन ही हमें समझ में नहीं आ रहे, तो एक बार क्वेश्चन. लोकस मीन्स इक्वेशन. Okay, all those points satisfying that condition. Locus means equation, the path, the distance equation में variable ఉంటుంది అంతే. Now see here, अब distance equation क्या होता है? First of all understand the question. इस question में उन्होंने ये किया, the variable circle passes through the fixed point p comma q and touches the x-axis and touches the x-axis. X-axis and touch అవుతుంది, ఈ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ మీదకి వెళ్ళి పాస్ అవుతుంది. సో and the locus of the other end of the diameter, other end of the diameter passes through fixed point p comma q. See, passes through fixed point p comma q. Okay, and is and x axis ని టచ్ అవుతుంది. రెండు పాయింట్లు ఇచ్చాడు, ఇది ఒకటి ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఉంది, ఇది ఒకటి ఎక్స్ యాక్సిస్ ని టచ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు దీని అదర్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డయామీటర్ అంటే ఈ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ నుంచి ఇటు వస్తేనే కదా ఈ అదర్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డయామీటర్ వచ్చింది. ఈ పాయింట్ సాటిస్ఫై అయ్యే ఏ ఈక్వేషన్ అయినా సరే దాన్ని లోకస్ అంటాం. మన ఈక్వేషన్లో ఆల్ఫా బీటాలు, ఓకే, ఆల్ఫా బీటాలు పాస్ అయ్యే ఈక్వేషన్. ఆల్ఫా బీటా అంటే ఎక్స్ కమ వై అన్నట్టే అది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ పాయింట్. ఈ పాయింట్ అనేది డయామీటర్. ఓకే, అండ్ ఈ సర్కిల్ అనేది ఎక్స్ యాక్సిస్ని ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది. ఎక్స్ యాక్సిస్ని ఇంటర్సెక్ట్, సి వాట్ ఈస్ ద లోకస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా బీటా, అది ఏ ఏ కండిషన్లను సాటిస్ఫై చేస్తుంది? ఒకటి, ఈ మిడ్ పాయింట్ ఉన్నదా అది సెంటర్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఆల్ఫా బీటా వచ్చిందా, ది సెంటర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు alpha plus b by 2, midpoint alpha plus b by 2 and q plus beta by 2, p plus alpha by 2 q plus beta by 2. రేడియస్ ఏమవుతుంది? సో రేడియస్ ఇది ఎంత రేడియస్, ఇది అంత రేడియస్, ఇది అంతే రేడియస్. ఓకే, అండ్ హౌ వి గాట్ ఇట్ ఈస్ p plus q by 2, ఎందుకంటే ఇగో ఈ పాయింట్ రేడియస్ ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ని ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది కదా, ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది. సో రేడియస్ వచ్చేసి క్యూ ప్లస్ బీటా బై 2, బికాస్ సెంటర్ ఇది కదా, ఇది సెంటర్ వచ్చిందా, సెంటర్ ఈ సెంటర్ అంటే పీ ప్లస్ ఆల్ఫా బై 2 అండ్ క్యూ ప్లస్ బీటా బై 2. ఇది సెంటర్ అయినప్పుడు ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ని టచ్ అవుతున్నప్పుడు ఈ వై కోఆర్డినేట్ ఉన్న చూసినా, దట్ ఈజ్ యువర్ రేడియస్, అదే आपकी రేడియస్. సో దిస్ ఇస్ ద రేడియస్. అప్పుడు సెంటర్ వచ్చింది, రేడియస్ వచ్చింది, ఈక్వేషన్ తీయొచ్చు. వాట్ ఈస్ దట్ ఈక్వేషన్? ఈ సింప్లిఫైడ్ దట్ ab whole square is equals to 2r square and ab is equals to 2r. ఇది రేడియస్ వచ్చింది, ఇది ab టోటల్ ఇట్స్ డయామీటర్ లోకస్ ఆఫ్ ది డయామీటర్. సో ఇది డయామీటర్ కండిషన్ ఏంటిది? ab is equals to 2r, ab square is equals to 2r whole square, 2r whole square. సో ఇదే ఈక్వేషన్ని, సో దిస్ ఇస్ ద కండిషన్, బట్ this is the condition. So that's it, you have to get this equation. What is why he took q minus beta? It is a distance, the distance, the diameter distance. What is the diameter? Put a p comma q, b alpha comma beta. So what is the diameter? Diameter is ab square is equals to 2r square, it is 4r square, r square వస్తుంది, but here
You can write AB square means Q minus beta whole square plus P minus alpha whole square, X1 minus X2 whole square plus Y1 minus Y2 whole square is equals to 2R. 2R means this is R. 2 into R not Q plus beta whole square. So you can substitute and simplify, you will get this equation. ఈ ఈక్వేషన్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తే నీకు వచ్చేది ఇదే ఈక్వేషన్. అండ్ ఆల్ఫా బీటా అనేది పాయింట్ సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తుంది కదా. సో మనం ఆల్ఫాని ఎక్స్ తోటి బీటాని వై తోటి రిప్లేస్ చేసినాం అనుకో, సో దట్ ఈస్ యువర్ ఈక్వేషన్. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ లోకస్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లోకస్. లోకస్ అంటే ఆ పాయింట్ ఏ ఈక్వేషన్ లో సాటిస్ఫై అవుతూ ఈక్వేషన్ వస్తుందో దట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్, దట్ ఈస్ ద కండిషన్. ఓకే, x minus p whole square is equals to 4qy. X minus p whole square is equals to 4qy. ఇదే నిన్న కూడా ఇదే వచ్చింది. మనం రెండు పాయింట్లు ఆల్రెడీ ఎలిమినేట్ చేసినాం. బట్ దట్ ఈస్ ద రాంగ్ వే ఆఫ్ అప్రోచ్. దట్ ఈస్ ద జనరల్ వే ఆఫ్ అప్రోచ్. అక్కడ మనకు సమస్యలు వస్తాయి. థింక్ ప్రాబ్లం అనేది కొంచెం ప్రాపర్గా ఆలోచన చేయాలి. నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ 3 కదా ఇది. I will cancel this screen. స్క్రీన్ చిన్నగా అవుతుంది కాబట్టి కొంచెం తిప్పలు ఉంది. 16 GB ర్యామ్ ఉన్నా కూడా సిస్టమ్ ఎంత స్లో అవుతుంది చూడు. సో ఇది వర్క్షీట్ 3, మనకు కావాల్సింది వర్క్షీట్ 2. Okay, next 7th question, 8th question, 6th, 7th simple. 1 second, I am getting a call. Hello, good evening. बस बढ़िया है, क्लास ले रहा था ट्यूशन. बोलिए. ठीक है, मैं जब फ्री होने के बाद ना कॉल. ठीक. He is my roommate from IIT Roorkee. He is submitting his PhD. So उन्होंने रूरकी पे ही है. So next, this is the interval. Now we have to understand this question also. The interval of in which lambda should be lie on this cuts the circle in real points. अभी आगे condition कुछ ध्यान रखना चाहिए. I'm taking new 2 more points. Level 4. And now what we have, the interval in which the value of lambda ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఆ ఇంటర్వెల్ చెప్పాలి. should lie on the line that this line equation cuts the circle in real points. Real points means the case is different.
please see here, this is a circle, this is a center, this is a radius, and this cuts the circle in real points. So this is a circle at 2 comma 4. If you see, concentrate here, 2 comma 4 means this is a 2 comma 4, this is 2 comma 4, and radius is 5. Radius is 5 means this is 4, and it will, the circle goes to like this. Radius is 4, 5, and this line cuts the circle. ఈ లైన్ ఈక్వేషన్ ని కట్ చేస్తుంది. కట్ చేయాలంటే ఎట్లా? So when it is intersect like this or like this, whatever, then the perpendicular distance जो है ना, అది 5 కంటే తక్కువ ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద కండిషన్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్కిల్ ఇక్కడ ఉంది, ఒక లైన్ కట్ అయింది, ఈ రెండు వేరు వేరు పాయింట్ల అక్కడ కట్ కావాలి అంటే ఈ ఎప్పుడైతే ఈ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అనేది రేడియస్ కంటే తక్కువ ఉంటుందో అప్పుడు అది కట్ అవుతుంది. 2 పాయింట్స్ ఒకటే కట్ అవుతాయి. ఓకే, so that's why he took perpendicular distance from the center to this line. From the center to this line is less than. Okay, so I am coming to here. The condition important. Condition important. So this is eighth one. Eighth one. The interval in which the value of lambda should lie in the so and so cuts the circle into real points. Means this is a circle. Okay, there is a center. There is a radius. Both can be captured from here. Okay, this is a line. We don't know how this line, but it cuts the circle at 2 points. Means ఇది ఒక లైన్ ఇట్లా వచ్చింది, ఈ రెండు పాయింట్స్ దగ్గర కట్ కావాలంటే so this perpendicular distance must be less than radius. Okay, perpendicular distance from center to line must be less than radius. So in this case, what it happens, perpendicular distance from the center, what is this line? It is 3x minus 4y is equals to lambda. And what is the center? It is 2 comma 4. What is the radius? If you to evaluate the radius, give me the answer of the 8th question, radius. Then radius చెప్పు నాకు. Can you please evaluate the radius? What is the radius? R is equals to under root of 4 plus 16 minus of minus plus 5. It is 25. So the radius is 5. So it is less than 5. And what is this? ఇక్కడ పాయింట్ దీనిలో సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలా. It is 3 2 just 6 minus 4 4 just 16 plus lambda by under root of 3 3 just 9 plus 16. This is the equation. And in this case, so how did you got plus 5? This side. See. It is under root of g square plus f square minus c. C is this side. 5. X square plus y square minus 4x minus 8y is equals to 5. When it comes to this side, become minus 5. Minus of minus plus 5. So if I need I need your help. How can it be? It is mod lambda minus 10 by 5 is less than 5. Is less than 5. It is 25. 5 less than 5. Lambda minus 6 minus 16 means 10. Okay. Now you can write lambda minus 10 modulus is less than 5. Then తర్వాత ఏం రాయాలి నేను నీకు చెప్పిన ఒకసారి. less than 25. Very good. నేను నీకు ఒకసారి చెప్పిన ఇది ఎట్లా రాస్తారు, mod x less than k అని ఉన్నది. What is this condition we write? x plus x less than k. అది తప్పది. నేను క్లాస్ రూమ్లో కూడా బోర్డుల మీద రాసిన, ఒకసారి రైట్ సైడ్ బోర్డు పైన రాసిన నేను మీ క్లాస్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు, కొత్త క్లాస్ రూమ్లోకి వచ్చినప్పుడు. ఇట్ ఈస్
minus k less than x less than k. This is the condition, most important condition. గుర్తుందా రాసిన లేదా బోర్డు పైన? Okay, so now this is minus 25 less than lambda minus 10 less than 25. Okay, so implies it will be minus 15 less than lambda less than 35. So ఇది ఇంపార్టెంట్. సి నాకు కూడా చిన్నప్పుడు టీచర్ స్పెషల్గా చెప్పలే. యాక్చువల్గా 2-3 అక్కర్లలో నాకు ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి అన్నట్టు. 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయంగా व्हाट हैपन मुश्किल आ गया था, तो इसलिए ये जरूरी है सीखना. जो भी सीखोगे ना बस शिद्दत से सीखो. बस आपको कोई डबल या आपको कोई एवरेज टीचर नहीं पढ़ा रहे, प्रॉपर सबक सीख चुका हुआ टीचर ही पढ़ा रहे. जो मुझे सही है 100% ऑथेंटिकेट है वही पढ़ाता हूँ. ठीक है, ध्यान रखना. तो द लैम्डा इंटरवल इज -15, 35 -15, 35. तो ये जरूरी है. तो योर पॉइंट विल बी -15, 35. This is the -15, 35. And next, the locus of the point of intersection perpendicular to tangents drawn. Locus of the point of intersection of perpendicular tangents drawn to each of the circle. So we have two circles. By ये एक circle है. Okay, and there is another circle. See here, this is both are same. रेडियस डिफरेंट, इसका रेडियस 3 है, इसका रेडियस 4 है. ठीक है, तो व्हाट इज हिज क्वेश्चन, व्हाट इज द लोकस ऑफ टैंजेंट, లోకస్ ఆఫ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్. అగర్ ఇది నువ్వు ఇట్లా తీసుకున్నావు అనుకో, సో ఇట్ ఈస్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ పర్పెండిక్యులర్ tangent drawn to each of the circle. How to see the graph? Sixth. అదే దాని కొరకే మనం ఇక్కడికి రావాలి. మనకు అదంతా క్లియర్గా అర్థం కావట్లేదు ఈ క్వశ్చన్. నౌ యూ కెన్ సీ. The given circle is this, another circle is this. He drawn this circle. Okay, the locus of the point of intersection which is perpendicular to tangents means what do we need? We need d. We need d is equal to 2, or what we need actually, the locus of point of intersection of perpendicular tangents drawn perpendicular tangents drawn to each of the circle. Perpendicular tangents drawn. हाँ, सी ये एक सर्किल है ना, ये दूसरा सर्किल है. इसकी टेंजेंट यहाँ ले लो, इसकी टेंजेंट यहाँ ले लो, तब जाके ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे. वैसे नीचे भी बन सकता है, तो ऐसे ले लो, तो फिर इसको ऐसे भी ले सकते हो. तो ये आपकी टेंजेंट परपेंडिकुलर. ओके, वो कहीं से भी ले सकते हैं, आप इधर भी ले लो, इधर भी ले लो. ओके, इधर भी ले सकते हो. कंट्रोल जेड टेंजेंट होना चाहिए, बस दोनों का टेंजेंट परपेंडिकुलर होना चाहिए. ओके, दोनों का टेंजेंट परपेंडिकुलर होना चाहिए. आप कैसे भी ले सकते हो. तो दिस सर्किल इज x square plus y square is equals to 16. इसका रेडियस 4, second circle is radius 3, and we observe that OD is parallel to AB. This is OD, this is a OD line. OD is parallel to AB. Therefore OD is also 4, and this is a triangle we need, ODA or AOD. Okay, so we need this point of intersection. हमें A का locus चाहिए.
This is point of intersection whose perpendicular tangents are there. तो ए का लोकस चाहिए, तो ए का लोकस जो है ना वो पाइथागोरस थ्योरम से आ सकता है। ए का तो पता, ये इससे R1 तो पता चल गया है। व्हाट इज दिस? OD इज इक्वल्स टू R1 इज इक्वल्स टू 4 and R square means this is, what is this? OB. This is your radius. R square is equals to OB square. It's a base into height. It's a perpendicular. It is what is this theorem? Pythagoras theorem. So R square is equals to, हमें OB पता है, OB is 3, it is 3 square. AB पता है, तो AB is 4. So R is equals to 5. This distance is 5. So this R is 5. Once R is 5, so your what is the question actually? R is 5 means D is 2R. What is the question? The question he made it as talato kalain question. Okay. Then whose diameter is D. D is equals to, we got 10. We got 10. So what is diameter? Who circles each diameter? And he is asking, so this is D. E locus untadi kada. So this E locus అనేది ఇట్లా వస్తుంది. Okay. E circle diameter కావాలంటే this is R is 5. R is 5. Therefore diameter is 2R. So 2R, D is equals to 10. Simple. It's a technical, a little bit confusing question, but need to concentrate. And next, one more tough question. Question number 11, 10. If the squares of the lengths of the tangents, see, if the squares of the lengths of the tangents from a point P to the circles are in AP, then A square plus B square C square. Above, ఒక పాయింట్ ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ సర్కిల్కి రేడియస్, ఈ టాంజెంట్ లెంత్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్, ఈ సర్కిల్కి లెంత్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్, ఈ సర్కిల్కి లెంత్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ తీసుకున్నామంటే అవి అరిథమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లు ఉంటాయి. ఓకే, దెన్ హౌ ద ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ సి స్క్వేర్ కాన్సెప్ట్. Okay, here we have to understand to go direct solution only because it is a time taking process. See, what is the length of the first circle? A P and a point x1 comma y1 తీసుకున్నాడా లేదా? So it is root s11. Our equation is square root of s11. So he took square, no problem. S11, S11 dash, S11 double dash. This is the first circle, second circle, third circle. These lengths are in AP. These lengths are in AP, arithmetic progression. So arithmetic progression లో ఒక కథ ఉంటుంది, ఇది క్యాపిటల్ S ఉండాలి ఇక్కడ. Arithmetic progression A comma B comma C are in AP, therefore 2B is equals to A plus C. This is arithmetic condition. Is note down in your book, it's important. A B C are in arithmetic progression, then 2B is equals to A plus C. So అందుకనే ఇది A1 B1 C1 తీసుకున్నాడు అంటే 2B is equals to A plus B. So ఇందులో ఏమన్నా there are cancellation, and he got A square plus C square is equals to 2B square means A square comma B square comma C square also in AP. ఈ కండిషన్ వచ్చిందంటే అది AP లో ఉన్నట్టే. So we got it, A square plus C square is equals to 2B square. So that's why they are also in AP, arithmetic progression. Please note down this point, AP condition. ఇది ఏపీలో వస్తాయి నీకు, ఈవెన్ సిడిఎఫ్ పాయింట్స్ కూడా ఓపెన్ చేసి చూడు, అందులో నీకు ఈ పాయింట్లన్నీ కంపల్సరీ వస్తాయి. నీ దగ్గర 9th క్లాస్ 8th క్లాస్ 9th క్లాస్ సిడిఎఫ్ బుక్ ఉంటుంది, అది దగ్గర పెట్టుకోవాలి, మస్తు మంచిగా పనిచేస్తుంది. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బుక్ ఆ సిడిఎఫ్ బుక్ అనేది. కాన్సెప్ట్, డెఫినేషన్, ఫార్ములా, క్వాలిటీ పాయింట్స్ వస్తాయి అక్కడ, జాగ్రత్తగా అది రివైజ్ చేయి. అప్పుడప్పుడు న్యూస్ పేపర్ చదువుతున్నప్పుడు ఇట్లా బుక్లు మర్రేయాలి అంతే. బ్రెయిన్కి
ఏమన్నా ఖర్చు అవుతుందా? కాదు కదా. నువ్వు స్విమ్ చేస్తే నీకు బాడీ పెయిన్స్ వస్తాయి. బట్ చదివితే ఏమొస్తుంది? చదివితే బ్రెయిన్ పెయిన్ వస్తుందా? రాదు కదా. సో ఆ బుక్ అట్లా పడేస్తూ ఉండాలి, ఎప్పటికొక యాక్టివిటీ చేస్తూనే ఉండాలి. ఓకే. సో నైన్త్ క్లాస్ CDF book is most I will not say it is useless, but I can't say even it is best. తప్పు అని అనలేను, చెడు అని అనలేను, కానీ బట్ అది ఒక 6.5 మార్క్స్ అయితే కవర్ చేస్తుంది. నీకు రా మెటీరియల్కి యూజ్ అవుతాయి, ప్రతి ఫామ్లో నీకు తెలిసి ఉండాలి. ఓకే. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ప్రాబ్లమ్ నంబర్ 11. The number of circles touching the lines. The number of circles touching these lines. ఈ లైన్స్ని టచ్ చేసే సర్కిల్ ఎన్ని? అన్నిటినీ కలవాలా. The lines whose touches these tangents, these lines, the circle number of circles touches all 3 lines. ఈ 3 లైన్స్ ని టచ్ చేస్తూ ఎన్ని సర్కిల్స్ పోతాయి? How can you get it? X plus 4y plus 1 is equals to 0. 2x plus 3y plus 4 is equals to 0. X minus 6y plus 3 is equals to 0. సొల్యూషన్ ఇయ్యాల. సొల్యూషన్ ఏం రాసిండు? దొంగ తప్పించుకున్నాడు. సొల్యూషన్ కన్కరెంట్ సంథింగ్ ఏదో ఒకటి, కన్కరెంట్ లైన్స్ అని చెప్పేసాను. Concurrent lines means what? What is mean by concurrent lines? గట్టిగా చెప్పు. లైన్ కు లెంత్ ఉంటుంది అసలు. లైన్ సెగ్మెంట్ కు లెంత్ ఉంటుంది. కన్కరెంట్ లైన్స్ అంటే ఏంటి మరి? లైన్ కి లెంత్ ఉండదు, లైన్ సెగ్మెంట్ కి లెంత్ ఉంటుంది. నువ్వు చెప్పే ఆన్సర్ తోటే దొరకబట్టినా లేదా? లైనే ఇటు ఆగది ఇటు ఆగది, నువ్వు లైన్ ఎట్లా డిసైడ్ చేస్తావు? పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది, అది ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకొక పాయింట్కి అంతే. కన్కరెంట్ అనేది ఇట్లా ఉంటే కన్కరెన్సీ, ఇట్లా ఉంటే కన్కరెన్సీ అంట. ఆల్ 3 లైన్స్ ఇంటర్సెక్ట్ ఎట్ 1 పాయింట్. అవి ఇట్లా ఉన్నదే అంటే ఇట్లా ఉన్నది అంటే ఆడ సర్కిల్ ఫామ్ అవుతుందా? కాదు. మనకి ఇట్లా ఉన్నది అంటే సర్కిల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇది ఒకటి వచ్చింది. ఓకే. ఇంకొకటి వస్తుంది ఇక్కడ, ఇంకొకటి వస్తుంది ఇక్కడ, ఇంకొకటి వస్తుంది ఇక్కడ. కన్కరెంట్ కాకపోతే 4 వస్తాయి. కన్కరెంట్ అయింది కాబట్టి ఒక్కటి కూడా రాదు. ఆప్షన్ ఇస్ 0. ఇది క్లియర్? ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేసిన? అవి ఏం సర్కిల్స్? Are you understanding what I written here? I written ఇప్పుడు 3 लाइन्स इंटरसेक्ट అయ్యాయి అంటే 3 लाइन्स अगर ये इंटरसेक्ट किया तो हमें कोई सर्किल नहीं मिलेगा, एक ही पॉइंट मिलेगा. लेकिन वही चीज 3 अलग-अलग लाइन्स है, तो एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा? जब सर्किल ट्रायंगल फॉर्म हो चुका है तो इन सर्किल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब इन सर्किल मिलेगा, एक सर्किल्स भी तो मिलेगा आउटर बाहर. 3 एक्स सर्किल्स है, एक इन सर्किल है, वो भी सारे लाइन्स को टच करेगा, ये भी सारे लाइन्स को टच करेगा. अगर यदि नॉन कनकरेंट है तो 4 मिलेगा, कनकरेंट है तो इसलिए एक भी नहीं मिलेगा, इसलिए एक भी नहीं मिल रहा है. नेक्स्ट, इज इट क्लियर? कनकरेंट का मतलब है वन लाइन इज, वो तो सारे इंटरसेक्ट, हमें ऐसा सर्किल बताओ वो सारे लाइन सारे सर्किल्स को टच करे, सारे लाइंस को टच करे, वो तो मिलेगा ही नहीं. आई थिंक यू गॉट इट. अब 12th क्वेश्चन ये है, 3x plus 4y plus k is equals to 0 is a tangent to circle x square plus y square is equals to 16. x square plus y square is equals to 16. ये tangent होना चाहिए. tangent होने का मतलब क्या है? अब बताओ, ये प्रॉब्लम हम खुद ही कर सकते हैं. ये दोबारा बोलो.
It is very simple. You have to understand. You have to understand. टचेस का मतलब क्या है? टेंजेंट का मतलब क्या है? ये एक सर्किल है, ठीक है? तो इसका सेंटर क्या है? रेडियस क्या है? ये तो हम कर सकते थे। ये लाइन इसको टच करेगा, मीन्स इट इज अ टेंजेंट लाइन। am I right? वंस इट इज टेंजेंट लाइन, ये जो रेडियस एंड सेंटर से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों सेम होना कि नहीं होना चाहिए? तो भाई ये पॉइंट है और ये लाइन है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू k। ओके, इसका रेडियस 4 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 4 करो, आपको k आएगा। आप खुद करके बताओ। सेंटर 0, 0 एंड लाइन ये है, इस सेंटर से इस लाइन तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 4 करके मुझे k वैल्यू निकाल के आप ही बताओ। आप खुद बोलो। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अरे सोचने की क्या बात है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की फॉर्मूला बताओ ना। अब ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सीधा ही है। इट इज अ k, इज अ प्लस, इट्स अ mod k बाई, मैं आपको बताता हूँ सीधा, बस ये सेंटर उसमें सब्स्टिट्यूशन करके डिस्टेंस निकालना होगा। It is 0, 3 into 0 is 0, 4 into 0 is 0, it is 0 plus k, नहीं k equals 0 नहीं आएगा, by under root of 3 square plus 4 square is equals to radius is equals to 4, therefore k is equals to, ये 16, 5 5 4 is 20, k is equals to 20, okay, k equals to 20, and equation of the normal of the circle at so and so point is so and so. How can we get it this equation? नॉर्मल इक्वेशन का हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे यहाँ पे ही, ओके, तो हमने ये कॉन्सेप्ट देखा था, x minus x1, कॉन्सेप्ट यही है, ओके। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, it is equation of normal line, x minus x1 into y1 plus f minus y minus y1 into x1 plus g is equals to 0 0 0, okay, so it is both statements are true, okay, and this is the formula। ये सारे प्रॉब्लम्स हमने कर लिया है, इज इट क्लियर? आप ये 21st प्रॉब्लम को कर सकते हो, करो। The intercept made by the circle x square plus y square minus 4x minus 6y minus 3 equals to 0 on the line x plus y minus 3 equals to 0. The intercept made by the circle, on the line, ये एक सर्किल मानो, पहले इसके सर्किल का खून निकालो, इसका खून निकालो, 2,3 इसकी सेंटर है, 2,3 इसकी सेंटर है, रेडियस इज इक्वल्स टू 4 प्लस 9 माइनस ऑफ माइनस प्लस 3 इज इक्वल्स टू 16, रेडियस इज इक्वल्स टू 4, रेडियस इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। द इंटरसेप्ट, अब ये तो सर्किल आ गया, ठीक है। अब x प्लस वाई माइनस 3, इसका मतलब है कल मैंने जो प्रैक्टिस के लिए शीट्स दिया है वो थोड़ा कुछ तो यूज हो रहा है कि नहीं हो रहे?
जो सर्किल रेडियस प्रैक्टिस करके निकाला है छोटी मोटी बेसिक प्रॉब्लम्स का, वो यूज हो रहे हैं ना? हाँ बस ठीक है। अगर यदि हो रहे हैं तो मैं ऐसा आपको बेसिक देखिएगा, आपको ये चीज मैं कहता हूँ, हम टफ प्रॉब्लम एक पकड़ने से अच्छा इजी प्रॉब्लम्स 10 पकड़ो। इसका मतलब ऐसा नहीं है इजी प्रॉब्लम्स इजी है, जो समझा हुआ प्रॉब्लम्स 10 पकड़ो, समझ में नहीं आने प्रॉब्लम्स एक पकड़ने से अच्छा समझा हुआ चीजों को 10 बार करोगे ना, तो बाद में उसी में आपका सोच बदलेगा, थोड़ा सा सोच बदल के आपकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में दिमाग बैठेगा। अगर जिस चीजें समझ में ही नहीं आता, ठीक है, वो प्रॉब्लम, तो वो नहीं करना चाहिए। अब ये लाइन है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई माइनस थ्री इक्वल्स टू 0। अब इस लाइन का जहाँ इंटरसेप्ट करेगा वो कौन है ये बता रहे हैं। ओके, it is a 5, it is a radius, it is a radius. What is the perpendicular distance? Let's try some time. इसकी perpendicular distance क्या होता है? ये perpendicular distance ये तो रेडियस है, ये रेडियस है भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। हम मैंने ड्रा किया है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ वो देखना पड़ेगा ना। इट इज अ मॉड सेंटर 2 कामा 3, 2 प्लस 3 माइनस 3 बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1। ओके, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 मतलब 2 बाई रूट 2 मीन्स रूट 2। रूट 2 इसका मतलब है रूट 2 क्या है, 4 से कम ही है ना, तो ये ऐसा करेगा। ओके, ये तो टच तो नहीं कर रही है, ये तो टच तो नहीं कर रही है, तो ये इंटरसेक्ट कर रही है दो अलग अलग जगह पे। तो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। क्लियर? द इंटरसेप्ट मेड बाय दिस सर्किल मीन्स दिस इज ए, दिस इज बी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस 2 पॉइंट्स। अब यहाँ से हमें ये 2 पॉइंट्स की आंसर निकालना पड़ेगा। दिस इज ए बी, ये तो पक्का ये तो टच करेगा ही नहीं, दिस इज रॉन्ग। ओके, so I can remove this portion. Okay, so we need this AB intercept made by the circle, means हमें ये points चाहिए बस, we need to get these points. Okay, and यहाँ थोड़ा सा और गौर से देखोगे तो ये x is equals to, हाँ ये ऐसा भी नहीं करना चाहिए। I will tell you, I will tell you, ये लाइन निकालना आसान है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ आप जब डिस्टेंस लिखोगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये डिस्टेंस 4 है ना, तो आपका ये डिस्टेंस तो 3 है, ये डिस्टेंस तो 2 है। ओके, तो अब ये डिस्टेंस 2 का 3 का मतलब यही है ना, तो आप दिस इज 3 मीन्स आपका जो सर्किल है दिस इज योर, दिस इज योर प्लेन, ये आपकी प्लेन बनेगी, ये आपका प्लेन बनेगा। एंड एट x is equals to 0, y equals to 3 means this is 1 point 0 at y is equals to 0, x equals to 3 means ये आपका एक और पॉइंट है, तो ये आपकी लाइन सेगमेंट बनेगी। so this is one intercept will form 0, 3, ये तो आ गया। और दूसरा एक और इक्वेशन निकालना चाहिए ये वाला, चलो लीव इट, ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इट टेक्स टाइम। ओके, so this second worksheet is completed, second worksheet is completed, so let's go for the third worksheet. Okay, अब थर्ड वर्कशीट और भी टफ है, तुम्हें देखते हैं।
आज एक केस था, हियरिंग था मेरा। मेरा फ्रेंड देख रहे मेरे एक केस को, उस पे फेक एविडेंस के चक्कर में वो फंसा हुआ है। ओके, so what is this equation? What is this synopsis? What is the first point? P of x1 comma y1, q of x2 comma y2 on the circle S is equals to is. What is this? क्या है ये? S12 ध्यान रखना चाहिए। लिखो इसको, पॉइंट लिखो, लिखो लिखो, पॉइंट लिखो, जरूरी है भाई। ये आपका प्रॉपर इंटरमीडिएट वाला कॉन्सेप्ट है, ये आएगा ही आएगा, नहीं छोड़ेगी। सर्किल वो तो s इज इक्वल्स टू 0 दिया जाएगा। जैसे सर्किल आया तो आपका रेडियस आएगा, माइनस जी कमा माइनस एफ आएगा, दोनों आएगा। अब p कमा क्यू, p कमा क्यू दो इंटरसेप्ट है, तो दिस इज अ कॉर्ड। सो द कॉर्ड जॉइनिंग टू पॉइंट्स इज, तो यू विल गेट दिस लाइन इक्वेशन। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये लाइन इक्वेशन बनेगा, मींस सीकेंट इक्वेशन ही बनेगा, सीधा सीधा। ओके, सीधा सीधा सीकेंट इक्वेशन ही बनेगा। S1 plus S2 is equals to S12, S12। Chord bisected at a given point, तो ये वाला सर्किल है। पहले इसको लिखो, नेक्स्ट एक सर्किल दिया हुआ है S is equals to 0 and bisected at a point P, this is a chord। ये कॉर्ड ये बाइसेक्टिव होता है। ओके, ये कॉर्ड भाई ये ट्रिग्नोमेट्री में भी जो बहुत ही यूज होते हैं, सीरियस कॉन्सेप्ट है, ट्रिग्नोमेट्री में जबरदस्त घुस के आएगा ये। ओके, दिस इज अ पी, इट बाइसेक्ट्स विथ 90 डिग्रीज, ये तो बाइसेक्ट ही करेगा कार्ड को। ठीक है, तो अगर यदि आप दूसरी डायरेक्शन में लेगे तो करना ही करेगा, बट ये 90 डिग्रीज का मतलब है वो बाइसेक्टेड है। So then the chord equation is, this line equation is S1 is equals to S11. Most important, second point. Please write down this point. S1 is equals to S11. S1 is equals to S11। एक तो P दिया हुआ, पहले दो पॉइंट्स दिया हुआ है, तब जाके कॉर्ड है। और दूसरा, अरे दो पॉइंट्स देगा तो कॉर्ड निकालने की क्या जरूरत है, सीधा लाइन इक्वेशन निकालो। S11 plus S2, S1 plus S2 is equals to S12 निकालने से अच्छा जब दो लाइंस पता ही चल गया तो लाइन निकालो। द chord joining two points, समझ रहे हो इस बात पे? कैन यू सी व्हाट इज दिस chord? अब मैं इसकी प्रॉब्लम्स करेंगे, तब एक बार सवाल पूछूंगा, भाई ये सर्किल है, सेंटर है, रेडियस है, एम है, 90 डिग्री से फलाना डिमकाना, तो आखिर तो जाएगी लाइन पी क्यू। ओके, आखिर तो जाएगी लाइन पी क्यू, लाइन पी क्यू। देखते हैं। And next, the chord bisecting the line given point is at S1 is equals to 0, S1 is equals to S11। तो ये सारे इक्वेशंस की प्रूफ है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं, आगे चलते हैं। chord of contact for any external point
टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। ओके, ये सर्किल है, एक्सटर्नल पॉइंट है, एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है, ड्रॉ किया है। इन गिवन सर्किल द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ द कॉन्टैक्ट। हाँ भाई, ये जो लाइन कॉर्ड है ये भी तो एक कॉर्ड बनेगी। ओके, this chord is chord of tangents drawn from the points x1 comma y1 to the circle s is equals to 0 is s1 is equals to 0। इसका नाम है s1 is equals to 0। अरे, ये तो s1 is equals to 0 हमारा, सॉरी 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 सॉरी, वो तो हमारा टेंजेंट इक्वेशन था। हाँ, so the chord joining for the point is a point of contact of two tangents is called chord of contact of the tangents। this is chord of contact of the tangents। ये समझ में आया मैंने जो सर्किल ड्रा किया? ये chord of point of chord of chord of contact of tangents। एक सर्किल होता है, बाहर एक पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट ये बनेगा, दूसरा टेंजेंट ये भी बनेगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टेंजेंट है, कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट, कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट। तो ये पॉइंट है, तो ये जो लाइन जो कॉर्ड है, दिस इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स, ये बनेगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट्स ऑफ टेंजेंट। तो हमें ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना पड़ेगा, जरूरत होगा तो उसके साथ काम कर सकते हैं। टू दैट द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट s1, इस अगर यदि ये x1 कमा y1 होगा, ये x1 कमा y1 होगा, ये जो इस लाइन की इक्वेशन है वो भी s1 इज इक्वल्स टू 0, वो भी s1 इज इक्वल्स टू 0 है। तो पहले हम जो s1 इज इक्वल्स टू 0 लिया है, तो वहां पे पॉइंट यहाँ पे होता है, सर्किल को उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट इक्वेशन क्या है वो साथ सबमिट करते थे। बट यहाँ की जो पॉइंट है, तो इट इज x1 कमा y1, तब जाके ये s1 इज इक्वल्स टू 0 ही बनेगा। ठीक है, प्रूफ की जरूरत नहीं, आगे चलते हैं। So this is a point of contact, okay, pair of tangents and all। So now prove that more next, pair of tangents, pair of tangents means prove that the combined equation of pair of tangents drawn from the point is, भाई यहाँ पे एक पॉइंट है, okay? ये एक टेंजेंट है, टेंजेंट 1, ये दूसरा टेंजेंट है, टेंजेंट 2। तो हमें एक ही इक्वेशन में इन दोनों का इक्वेशंस निकालो। तो उसका फॉर्मूला जो है s1 इज इक्वल्स टू s1 स्क्वायर, s1 इज इक्वल्स टू s1 स्क्वायर। ध्यान रखना, ये भी लिखो, पॉइंट लिखो, कंडीशन लिखो। पहला जो पॉइंट यहाँ हमने लिखा है आपको, ये s1 प्लस s2 इज इक्वल्स टू s12, ये लाइन सेगमेंट की जो कॉर्ड की इक्वेशन है, जॉइनिंग इट टू पॉइंट्स द सर्किल गिवन पॉइंट्स। नेक्स्ट s1 इज इक्वल्स टू s11, कॉर्ड ऑफ बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट, अगर जो दिया हुआ पॉइंट पे वो बाइसेक्शन करेगा कॉर्ड को, उस कॉर्ड की इक्वेशन है। नेक्स्ट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट सेम है, एंड इसका इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन, थर्ड पॉइंट, third main point of chord of contact of the tangents is drawn from to this point is s1 is equals to 0। and this is the fourth equation, so that the combined equation of pair of tangents, pair of tangents में वो pair of straight pair of lines आता है, ये intersecting lines ही है। तो ये t1 है, ये t2 है। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको दोनों इक्वेशंस मिलेगा, बट ये कॉम्प्लिकेटेड है, वो सीधा सीधा दिखेगी नहीं, ये उसमें कंफ्यूजन है थोड़ा सा। ठीक है, इसका कुछ अलग फॉर्म से आएगा, इसका कंडीशन है ना, कुछ अलग फॉर्म से ही आएगा, तो जब करते वक्त ना पता चलेगा। एंड यहाँ पे ये लिखो, ये लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी लिखो, ये भी लिखो, ये भी लिखो। पहले ये कंडीशन लिखो, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, प्लीज टेक ए हेडिंग एंड राइट डाउन, पेयर ऑफ टेंजेंट्स इज इक्वल्स टू दैट द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम, यहाँ पे पॉइंट यहाँ की है, पहले हम पिछले वर्कशीट में देखे थे पॉइंट ऑन द सर्किल, अब पॉइंट ये सर्किल वाला नहीं है, यहाँ की है, दूसरी पॉइंट है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है। s into s11 is equals to s1 square।
And now next equation. This is the next equation. Point of contact. The angle between, this is angle between pair of two tangents drawn from an external point. ये आपकी θ/2 है, θ/2 है. इसकी जो फॉर्मूला है tan θ/2 इज इक्वल्स टू, ये तो सीधा सीधा, ये तो पाइथागोरस थ्योरम है, ये तो पाइथागोरस थ्योरम है, क्योंकि दिस इज योर लेंथ ऑफ द टेंजेंट, दिस इज योर रेडियस ऑफ द सर्कल, and this will be the tan θ/2 is equals to r by, it is opposite by adjacent, and ये tan θ/2 का है and this is tan थीटा का है. ओके, तो यहाँ के फॉर्मूला अलग है. एंगल बिटवीन ये tan θ/2 की है और tan थीटा का है. जैसे θ/2 निकालोगे फिर भी थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू भी कर सकते हो, या तो सीधा ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो. Okay, so here I would like to stop for 10 minutes. Okay, तो आप भी थोड़ा सा ब्रेक ले लो. I will come back. Is it clear? चले स्टॉप से शुरू. हाँ हाँ 9:30 9, अरे अभी ले लो, कंटिन्यू करो भाई. 10 मिनट ब्रेक कर लेते हैं, 9:40 तक ही लेंगे, ठीक है, ज़्यादा टाइम ले लेंगे.